Hello students, how are you? Hope in good health. Let's proceed with another part of this chapter, Surface Chemistry. Chapter number 5, 12th standard, as you all are familiar with it. So let's take out difference between physical adsorption and chemical adsorption. We had seen few characteristics of this topic in our previous lecture. Now let's take out what are the difference between these two types of adsorption. See students, firstly, it rises because of van der Waals forces. Okay, your this uh, physical adsorption, whereas chemical adsorption caused by chemical bond formation. Okay, and physical adsorption not specific in nature. Okay, and chemical it is highly specific in nature. Means it is particular to particular kind of reaction and particular kind of composition, so that's why it is highly specific. And it is reversible in nature. Physical adsorption, it is reversible in nature. It can move in forward and backward direction easily. And whereas chemical adsorption, it is reversible, irreversible. When once you have started with the reaction, you can't come back into your reactant form in your chemical adsorption. Okay, and physical adsorption, it depends on the nature of the gas, which kind of gas you are going to just absorb it on your adsorbent. It depends upon the nature of the gas. More easily liquefiable gases are adsorbed readily. So this is very particular about your physical adsorption. Whereas chemical, it depends definitely on the nature of gases which can react with adsorbent, show chemisorption. It should react with your adsorbent also. And enthalpy which is required for this complete process, that is quite low, 22 in between 40 kilojoule per mole. Whereas chemical adsorption, energy enthalpy of adsorption, it is high. It is in between 82 to 40 kilojoule. And low temperature is favorable for adsorption. Normal low temperature, room temperature, it can be carried on very natural or very easygoing conditions, whereas chemical adsorption, high temperature is favorable for this kind of adsorption. Okay, so let's see now more. uh, no appreciable activation energy is needed for it. You know that you had studied about this in our kinetic uh, chapter. So no appreciable activation energy is required, whereas high activation energy is sometimes needed for carried your uh, chemisorption. It depends upon the surface area. How much surface area is available, it depends upon that. And it increases, if you increase the temperature, means increase the conditions or increase the surface area, then your physisorption, the rate of your physisorption would be changed or increased. Okay, it also depends on the surface area. It too, it is also variable with your temperature. Even surface area also, if you increase the surface area, the chemisorption would also be increased. And very important, it results into multi-molecular layers on the adsorbent surface under high pressure. Means the physisorption can be formed in the pattern of multi-molecular layer, whereas it is only your chemisorption, it is only your unimolecular layer. One layer would be formed of your this complete chemisorption, or your adsorbent, which is getting adsorbed on your adsorbent. Okay, so now let's see another topic, that is information you can check it about your Freundlich adsorption isotherm. What is this? What is isotherm? You had studied this about isotherms and all in your 11th standard. Fine. So what is this scientist, chemist, he had given this adsorption isotherm. So let's check out what it is.
your friend Lake, what he had told that in 1909 he gave an empirical relationship between quantity of gas, okay, quantity of gas adsorbed, how much quantity of gas adsorbed by unit mass of soil it absorbed. Relationship between what? Relationship, it is between your adsorbent and absorbent. Now, what are the condition? And pressure at a particular temperature, at certain temperature, at pressure, how much quantity of gas it is absorbed by unit mass of solid. So this relationship you can express it by x upon m, that is equals to k multiply p raised to 1 upon n, where n it should be greater than 1. Okay, x is what? X, it is a mass of gas which is absorbed on the mass x, it is a mass of gas. M it is your adsorbent at pressure P. K and this K and N, these are your constant which depends upon the nature of your adsorbent and the gas at a particular temperature. Okay. Now, the relationship is generally represented in the form of a curve where it is graphical, or you can say in the form of a curve where mass of a gas, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो अगेंस्ट अ प्रेशर, कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट सॉलिड के ऊपर, यू आर प्लॉटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. And these curves indicate at a fixed pressure there is a decrease in physical absorption. वो क्या है कि physical absorption में decrease होगा with increase in temperature, and these curves always seem to approach saturation at high pressure. Saturation हो जाता है high pressure के ऊपर. Let's check out this curves now. See, you can check it out. At fixed temperature, आप यहाँ पे देख सकते हो, you are plotting curves in between a ratio of x upon m versus your pressure. You can just check it out here. Well, you have and these are at the constant, you can say that certain temperatures, 273, 244 Kelvin and 195. So you can check out a variation in the temperature and you can see these different, you are obtaining these different curves over here. See, you can check it out here. You can check out this curve, see this curve, okay, this one. So these all are the curves which you are obtaining and you are checking out the. Now what you are doing, taking logarithm of equation 1, taking log on both the sides, log x upon m, that is equals to log k plus 1 upon n log p. Now what is important, see, validity of this Freundlich isotherm, it can be verified by plotting. You have seen this graph, x upon m on y-axis, these are your coordinates, and log p where you are just abscess on your x-axis. If it comes to be straight line, Freundlich isotherm is valid. अगर ये straight line आता है तो Freundlich isotherm valid है, otherwise not. And the slope of the straight line gives the value of, ये जो slope है ना आपका, ये किसकी value दे रहा है, it gives you the value of 1 upon n की value दे रहा है. और intercept on your y axis, ये जो आपके y axis है इसके ऊपर अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करके इंटरसेप्ट ऑब्टेन करोगे, इंटरसेप्ट जो y axis का है वो किसकी वैल्यू देगा, log k की. यू कैन चेक इट आउट हियर. सी, ये जो स्लोप है it gives you a value of what, it gives you a value of 1 upon n, और intercept it gives you, see, you can check it out, जहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है on your y axis it gives you a log k, and the slope, ये slope आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, it gives you a value of 1 upon n की.
this slope gives you a value of, you can check it out here, 1 upon n. Okay, hope the things are getting clear. Now see, Freundlich isotherm explain the behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1 upon n and have value between 1 upon n की जो value है वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1. Probably range from 0.1 to 0.5. So जो equation 2 है, it holds good over a limited range of pressure. बहुत लिमिटेड प्रेशर के रेंज के लिए वो इक्वेशन 2 हमारी है, दैट इट गिव्स यू गुड रिजल्ट. सपोज 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो x अपॉन m है ना जो आपका, वो क्या हो जाएगा, यस, सो x अपॉन m दैट वुड बिकम्स कांस्टेंट. और जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसका बचा, प्रेशर का. That will become independent of pressure when 1 upon n, अगर 1 upon n की वैल्यू 1 है तो x upon m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k. You can say k multiply and p that is x. So हम what we can say that k it is multiplied by, तो आप क्या कह सकते हो, x upon m that is directly proportional to p and the absorption varies directly with the pressure. Excuse me. So what we can say that adsorption है वो vary करेगा किसके साथ, directly with the pressure. So your adsorption it directly varies with the pressure. So both the conditions are supported. The experimental isotherms always seem to approach saturation at high pressure. This cannot be, वो सैचुरेट हो जाता है, फिर उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो प्रेशर के मतलब कंडीशंस वेरी नहीं करती हैं, देन this cannot be explained by Freundlich isotherm and it fails at a high pressure. फिर हाई प्रेशर पे उसका जो रिजल्ट है हमें उतना देखने को नहीं मिलता है. Hope the things are getting clear to you. Okay, now explain the adsorption from solution phase. Okay, see, these are the few very important topics I have taken in the question form, so the things getting easy for you. Okay, so what it is, this solid can absorb solutes, okay, from solution also. You had seen earlier in between your you had applied it on the solids. Now when we are talking about your this solution, so when a solution, you take an example of acetic acid in water. Acetic acid in water is shaken with charcoal, ठीक है. A part of acetic acid है वही absorb होगी charcoal के ऊपर. So the concentration of acid, acid का concentration है वो decrease होगा solution में. क्यों? क्योंकि वो absorb कहाँ हो रही है, charcoal के ऊपर. Similarly, litmus solution when shaken with charcoal becomes colorless. अगर आप उसको shake करोगे ना charcoal के साथ तो वो colorless हो जाएगा, क्योंकि उसका जो you can say color particle or the means molecules, it get absorbed on what? It get absorbed on your charcoal. Even the precipitate of MgOH2 twice attains blue color when precipitates in the presence of magnesium reagent. और ये कलर क्यों आ जाता है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज. सबसे पहली, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. व्हेन द एब्जॉर्प्शन आपका टेम्परेचर absorption decrease with an increase in temperature. Extent of absorption decrease होगा temperature के increase के साथ. Okay, और absorption increase भी होगा. कब increase होगा बेटा? जब आप उसका surface area है with an increase of surface area of the adsorbent. Extent of absorption depends on the concentration of a solute in the solution. कितना आपका solute present है solution है उसके ऊपर भी depend करता है. Absorption depends upon the nature, आपका जो absorbent है और absorbate दोनों के nature के ऊपर भी depend करता है. The precise mechanism of absorption from solution is not known, but the
फ्रेंडलिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली उसने डिस्क्राइब किया बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन. अब उसने क्या बोला, पहले हमने क्या लिया था, प्रेशर, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट द गैसेस. अब वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, लिक्विड्स. तो व्हाट, इंस्टेड ऑफ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के, इज टेकन इन अकाउंट इन द सेम इक्वेशन. तो व्हाट यू विल से नाउ, x अपॉन m इज इक्वल्स टू के सी. पहले हमने c की जगह क्या था, p रेज टू 1 अपॉन n, और c क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है when adsorption is complete. अब same way on taking logarithm, same way you are deriving this equation on taking the logarithm on both the sides. Log x upon m is equals to log k plus 1 upon n log c. Again, plotting log x upon m against log c at a straight line is obtained, which shows the validity of your Freundlich isotherm. This can tested experimentally by taking a solution of different concentration of your acetic acid. Okay, so students, equal volume of solutions अगर आप add करते हो, equal volume of charcoal in different flask, तो final concentration determine होगी in each flask after your adsorption. और ये डिफरेंस जो आप देखोगे ना, इनिशियल मतलब आपने पहले ऐड किया तो आपको पता कैसे लगेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तभी आपको पता लगेगा इस बात का. सो डिफरेंस जो इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो आपकी किसकी वैल्यू आपको देगी, गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ x. जो आपने पहले आपकी ये इक्वेशन है, आपको पता है x इज व्हाट, इट इज रिलेटेड विद योर एड्सॉर्बेंट and m it is related with your absorbent. So it gives you a validity of Freundlich isotherm. You can establish it. Student, these things you are supposed to practice it. Then only you will get quite command on the content. Now, what are the applications? Okay, what are the applications of your adsorption? Why you are studying? Where it is applied. See, phenomenon of adsorption finds a number of applications. See, production of high vacuum. The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum के लिए. Gas mask device provide ये फॉर्म करने के लिए. गैस मास्क इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ activated charcoal or mixture of adsorbent, usually used for breathing. कहाँ पर यूज होते हैं ये सब, कोल माइंस में. ओके, इवन फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस. कंट्रोल, ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करने के लिए for your perfect experimental conditions. Silica and aluminium gels are used as adsorbent for removing moisture or controlling humidity. Removal of coloring matter फ्रॉम सोल्यूशन, उसके लिए भी होता है. एनिमल चारकोल रिमूव कर देता है और जो भी आपके कलर्स यू इम्प्योरिटीज विच यू आर नॉट रिक्वायर्ड. हेट्रोजेनस कैटालिसिस. सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट increases the rate of reaction. So there are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalyst. Okay, so even manufacturing of ammonia using iron. जब आप अमोनिया बनाते हैं, आयरन को आप किसकी तरह यूज़ करते हो, कैटलिस्ट की तरह. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें आप फाइनली डिवाइडेड निकल को यूज़ करते हो इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स. ये है आपके होमोजेनस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स. So what I meant to say that heterogeneous catalyst means adsorption जो reactant का है solid surface of the ये increase हो जाता है आपका rate of reaction. तो वहाँ पर भी आपका ये adsorption process है, it is getting used. Separation of inert gases due to the difference, अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है डिफरेंट गैसेस का चारकोल के ऊपर. सो मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेट हो जाएगी आपकी बाय on your coconut charcoal at different temperatures. Okay,
In curing disease, number of drugs are used to kill germs by getting absorbed on them. There also this process is getting used, or it is applied. Fruit flotation, you had studied this in your chapter number 6. There also low grade sulfide ore is concentrated by separation it from silica and other earthy matter by this method. इसकी हेल्प से वहाँ पे भी ये सेपरेशन इजी हो जाता है. मेटलर्जी में बेसिकली आप अगर कहें तो वहाँ पे भी यूज़ होता है ये. Even adsorption, your indicator, surface of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like cuisine, here this fluorescence, and producing a characteristic color at the end point. Chromatographic analysis. क्रोमेटोग्राफिक एनालाइज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ, ये एड्जॉर्प्शन के फिनोमेनन के ऊपर ही ये भी बेस्ड है. आपने 11th स्टैंडर्ड में दिस यू हैड स्टडीड, आपके जो लास्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, फ्रॉम देयर यू हैव स्टडीड दिस मेथड. क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा है. So adsorption find a number of applications in analytical and your industrial fields. So here again give information you had studied. Now this one in little detail, homogeneous catalyst and your heterogeneous catalyst. What is the difference in दोनों के बीच में? Let's understand that also. Yes. See, homogeneous your catalyst, when the reactant products, जब भी आपके reactants products और कैटलिस्ट सेम फेज में, ये आपको होमोजेनस मतलब वेदर ऑल आर इन लिक्विड फेज, ऑल आर इन सॉलिड फेज, ऑल आर इन योर गैशियस फेज, तो क्या हम बोल सकते हैं? बट विल से यू कैन से अ होमोजेनस कैटलिस्ट आर सेड टू बी होमोजेनस कैटलिस्ट. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट. ऑक्सीडेशन ऑफ, you can check out an example. So oxidation of sulfur dioxide into your sulfur trioxide with dioxidation in the presence of oxides of nitrogen as a catalyst in the lead chamber process. Here your reactant, sulfur dioxide and oxidation catalyst, nitric oxides, they all are in the same phase. Okay, so let's see another example also. Hydrolysis of methyl acetate. It is also catalyzed by H plus ions furnished by hydrochloric acid. See, all are in, you can say that, liquid state. So both the reactant catalyst are in the same phase. So it's an example of homogeneous catalyst. Even you check out one more example. Hydrolysis of sugar is catalyzed by H plus ion furnished by sulfuric acid. See here, solution plus your water, hydrolysis of that is actually in the presence of your sulfuric acids, gives you glucose and fructose solution. So all are in the same phase. Both the reactant and catalyst are in the, they are in the same phase. Now another one, heterogeneous. The catalytic process in which the reactants and the catalyst are in the different phases is known as heterogeneous catalyst. Different phases are required, not the same phase. अलग अलग phase होनी चाहिए. Some of the examples of your heterogeneous catalyst, you can check it here. Oxidation of sulfur dioxide, sulfur trioxide in the presence of your platinum. यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट है गैशियस स्टेट में, कैटलिस्ट है सॉलिड स्टेट में. कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, हेबर्स प्रोसेस. वहाँ पे भी आप देख सकते हो गैशियस है, जो आपका कैटलिस्ट है दैट इज इट इज इन योर इनटू योर आयरन है, वो आपका सॉलिड स्टेट में है. So oxidation of ammonia into nitric acid in the presence of platinum gauze, that is Oswald process. वहाँ पे भी आप देख सकते हो reactant, they are in your gaseous state and your catalyst it is in a solid state. Okay,
सो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो बहुत इंडस्ट्रीज में और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल. ओके, फाइनली डिवाइडेड निकल आप उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हो. रेस्ट अदर थिंग्स आर इन योर विच फॉर्म? दे आर इन योर gaseous or liquid form, whereas your catalyst it is in your solid form. One of the reactant is in liquid state, यहाँ देख सकते हो, other in gaseous state, while the catalyst it is in your solid state. Okay, so now explain the adsorption theory of heterogeneous catalyst. क्या इनकी adsorption की theory है? Let's check it out this also. See, this theory explains the mechanism. We can say that ये क्या explain करेगी आपको heterogeneous catalyst के बारे में. ओल्ड थ्योरी को जिसको हमने कहा एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट वाज दैट द रिएक्टेंट है वो क्या था, गैसियस स्टेट में है, या आपका सॉल्यूशंस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द surface of your, you can say that, the solid catalyst. Okay, so increase in concentration of reactant, आप increase अगर concentration reactant की on the surface increases, क्या होगा आपका, increases the rate of your reaction. और adsorption आपको पता है it is your exothermic process. The heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of reaction. ओके, ये आपका ओल्ड. अब मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या बता रही है आपको, व्हाट इट इज टेलिंग? मॉडर्न योर एड्सॉर्प्शन थ्योरी इट इज टेलिंग यू इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स. ये आपको बताती है कि ये आपका कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स थ्योरी. ओल्ड और आपकी यू कैन से दैट ऑफ यू जस्ट फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड. कैटलिक एक्टिविटीज लोकलाइज्ड कहाँ पे है, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट के ऊपर है. और इसमें द मैकेनिज्म विच 5 स्टेप्स में आप देख सकते हो. सबसे पहला डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट का डिफ्यूजन होता है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, ठीक है. उसके बाद एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. सबसे पहले डिफ्यूज्ड हुए, दूसरी बार एड्सॉर्ब हुए. ओके, थर्ड केस, थर्ड में in third case what will happen, see, in third case occurrence of a chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate. अब क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है. आपको पता है रिएक्शन में कैटलिस्ट तो यूज होता ही नहीं है. ओके, सो अब इंटरमीडिएट वुड बी फॉर्म. अब ये एड्सॉर्प्शन हो गया, आपने पहले डिसॉर्प्शन टर्म भी पढ़ी थी. अब क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन वो होगा. अब क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन टू मोर रिएक्शन टू अकर. अब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर से आपका सरफेस आ गया और रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए. इज इट क्लियर? सो द डिफ्यूजन of reaction product away, just diffusion of reaction products away from the catalyst surface. अब वो अलग हो जाएंगे catalyst के surface पे. So the surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valences. Bulk means जो surface है catalyst का inner part की तरह it has a free valence which provide the seed for a chemical process of अट्रैक्शन. जो केमिकल प्रोसेस के लिए आप उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए उनके लिए दे आर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर वे. होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. सो नाउ let's take out the information about important features of solid catalyst. Okay, see, the important features of your solid catalyst are as, just you can check it out here, activity. Activity of a catalyst depends upon the strength of chemisorption. कितना क्या आपका किस extent तक chemisorption हो रहा है, to a large extent. The reactant must get absorbed reasonably strongly onto the catalyst to become active. However, they must not be absorbed so strongly they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for absorption. सी, आप यहाँ देख सकते हो 2H2 + O2
that is in the presence of your catalyst platinum and 2H2O. ओके, सो एक्टिविटी जो कैटलिस्ट की किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी केमिसॉर्प्शन की स्ट्रेंथ कितनी है. स्ट्रेंथ उसके लार्ज एक्सटेंट है तो आपकी एक्टिविटी भी इट विल प्रोसीड एट अ हाई रेट. यू कैन से दैट. ओके, सिलेक्टिविटी. नाउ अनदर फीचर दैट इज आपका कैटलिस्ट का जो सॉलिड कैटलिस्ट है उसकी सिलेक्टिविटी कैसी है. सिलेक्टिविटी से selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product selectively. आप हर कैटलिस्ट हर आपके केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हो. सिलेक्टिव आपका जो कैटलिस्ट है यू विल यूज़ इट व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. So selectivity of different catalyst for same reaction is different. For example, starting with H2CO and are using different catalyst, we get different product. देखिए आप CO plus 3H2 अगर आप निकल के साथ कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है. You are getting methane. Okay, in the same manner अगर COH2 को आप in the presence of another catalyst with copper, zinc and Ca2O3, then what you are getting? You are getting alcohol, that is CH3OH. In the same manner, only in the presence of your copper, आपने कैटलिस्ट सिर्फ कॉपर लिया है तो आपको क्या मिल रहा है. एल्डिहाइड मिल रहा है. ओके, सो सिलेक्टिविटी ऑफ योर कैटलिस्ट इट गिव्स यू अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल्सो. इवन द रिएक्टेंट आर सेम एंड फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर प्रोसीडिंग you need a different catalyst. So thus it can be inferred that the action of catalyst is highly selective in nature. As a result, a substance which acts as a catalyst is one reaction may fail to catalyze another reaction. So hope the things are very much clear to you students. This chapter it is a little easy going and concept based, but still you are supposed to read and go through the questions and go through the topics in very attentive manner. Then only you can develop your command on your topics, on your content. And students, just it's all for today's session. We will just complete the remaining topics of this chapter in our next session. And this hopefully this video it would be quite useful to you. So please like it, subscribe this channel so it will motivate me to create more videos, and just to put your good and nice comments. So bye students, take care of your health. Take care.